Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The lecture is now being started. Lecture number 23, Losses in the Practical Switches, Chapter 1, Ashfaq Ahmed. The part of this lecture we already have covered in the previous 2 hours lectures. Now, some of the rest of the part of this lecture. So this thing we have studied before. We know that in the transistor or in any switching devices, there are two kinds of losses. But one is the conduction losses. Number two is the switching losses. So we derive this simple and basic mathematics, the equation for the switching losses and the equation for the conduction losses. We have done these things before. We just started by taking the ideal switches, and we found there are no losses in the ideal switches. So the practical switches cannot be ideal, but it should be as close as to the ideal switches. So this is the trend of the power electronics research, that everyone is trying to be as close as to the ideal switches. So, and we have done these things before in the last lectures. After just few minutes, I will take attendance, and this time I will not download the attendance, but I will mark directly on the CMS attendance, and I will call online attendance. Those who will reply, I will mark them present. Those who will not reply, I will mark them absent. And these things will continue to the last lecture. Okay, so we did this one, and I think we know we have done these things, and we solved example 1.5, and we found that the switching losses, we found there are two types of losses. Number one is the conduction losses. Okay, here we did not calculate the conduction losses, we only calculate the switching losses. Example from 1.1 to 1.7, I think, till the last. All the examples are important in chapter 1, including the end chapters problem. So please be careful, at least 1 or 2 questions are asked from this chapter in all the examinations. So we did example 1.6, a transistor switch controls 25 kilowatt load. Find conduction losses, switching losses, total losses, means all the losses we have to calculate this time. And we solved this example. There were 2 parts. I hope that I'm audible to you, and my slides are also visible to you. If you have any question, please raise 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 your hand or ask the question directly. So example 1.6, a transistor switch controls 25 kilowatt load. एक ट्रांजिस्टर स्विच है जो कि 25 किलोवाट का लोड को पावर प्रोवाइड कर रहा है. इसमें हमें कंडक्शन लॉसेस एंड स्विचिंग लॉसेस मालूम करने हैं. And the data given to you that the supply voltage is 500, supply current is 50 amps, leakage current is 1 milliamps, collected to emitter saturation is 1.5 volt, RL is 10 ohm, frequency is 100 hertz, and K is equal to 50%. Turn on switch time is 1 pi. So please, I have redrawn here the circuit. So the frequency given to you is 100 hertz. It means if the frequency is 100 hertz, and because of the 50% duty cycle, T switch on is equal to T switch off. So the frequency is 10 time period for 100 hertz. Time period is 10 millisecond. So the half of the time is half of the on time, and half of the off time will be 5 milliseconds. Both are equal because of the duty cycle is 50%. If we compare, I have exaggerated the graph. In actual, if we draw
the scale graph, then I think I cannot, no one can visible this small amount of the time. So the total time is why in actual in we this T off time is not exactly 5 milliseconds, because the total time is given to you 10 milliseconds. Sorry, yes, 10 milliseconds, and the half of the time is 5 milliseconds. But half of the time means from starting from this point, to up to this point. This is the half of the cycle. So we have ignored 1.5 microsecond, and we just in actual, if you see, this time is basically 5 millisecond, means 5,000 microsecond minus 1.5 microsecond. The total time will be 4,998.5 milliseconds. It's equal to 5 milliseconds. That's why we have just ignored this one here. And similarly, we also ignored the 3 microsecond, as if we compare 3 microsecond with 5,000 microsecond, then this is just ignorable. So please remember, in section A, part A, frequency was 100 hertz, and the T switch on, T switch off equals to 5 millisecond, as we have assumed. And for the calculation of these switching losses, the T switch on is 1.5 microsecond, and the T switch on off is 3 microsecond. Please remember these things. And I have given the equation here. First, for the conduction losses, we did this, I think, before. So we know about the conduction losses. I mean, this is the formula given here. For the conduction losses, Vs I leak, and the power loss on state kahan par hai? Power loss on state V saturation IS. So we calculated this thing, and we found total conduction losses total. So the was 2.5 millijoules energy loss during off state. This was basically conduction losses. The off state की दौरान the energy loss है 2.5 millijoules है, and this is the on state के दरमियान जो energy losses है वो 375 millijoules. When we add together, we will get both the conduction losses. So the total conduction losses will be, if we see here, this loss is very less than this loss. So which loss is dominant here? The energy loss during on state. Why this one is very small as compared to this one? Because this involves the eye leakage current, and the eye leakage current is here, and this eye leakage current is given to you 1 milliamps. So that's why it is very less, and normally it is ignored. Okay, now it's time to calculate for the switching losses. We have done this up to this part in the last lectures. Before going ahead to start the topic or start the section part B of this equation, I have to take the attendance. So I'm calling your name, and you have to answer me. Only 9 attendees, probably more, because some guests are also added here. Okay, Muhammad Rizwan, are you here? Muhammad Rizwan, please respond to me. Yes, sir, present. Thank you. Faraz Ahmed. I will ask only 2 times. Faraz Ahmed. Muhammad Zahir. Amna Imran. Muhammad Zahir. Amna Imran. Talia Amir. Present, sir. कौन प्रेजेंट? तालिया आमिर या आमना इमरान? नाम बताइए सर तालिया
तालिया आमिर प्रेजेंट है, ठीक है। Yes, sir. नताशा राव, नताशा राव, मोहम्मद अली, Present, sir. थैंक यू। मोहम्मद फहद इम्तियाज, फहद इम्तियाज, मुशाहिद राव, मुशाहिद राव, फहद इम्तियाज ने जवाब दिया? नहीं दिया। मोहम्मद अली ने जवाब दिया है? मोहम्मद अली, आर यू हियर? Yes, sir. अच्छा, ठीक है। मोहम्मद फहद इज एब्सेंट एंड मुशाहिद राव इज एब्सेंट। हदीद खालिद, हदीद खालिद प्रेजेंट है सर। प्रेजेंट है हदीद खालिद, ठीक है। आप कौन है? हदीद खालिद, आवाज। अक्सर शफकत, हदीद खालिद से। ठीक है। अक्सर शफकत, ये तो हमसे एब्सेंट ही रहती है, ठीक है। अब्दुल्ला आसिफ भट्टी, आवाज बंद करें भाई प्लीज। जी जी, मुशाहिद राव, अच्छा अच्छा, मुशाहिद राव, ओके ओके, आई फाउंड यू। मुशाहिद राव भी प्रेजेंट शायद है, भी बोलने वो भी प्रेजेंट है ठीक कि है, कमेंट ठीक है। सेक्शन में बता रहे ठीक है, ठीक है। हैंड रेस कर सकते हैं आप लोग, कोई मसला नहीं है। आई मार्क मुशाहिद हैं। राव सर एज, मुशाहिद का भी वो देखने कमेंट में बता रहे हैं। हाँ मैंने वो उनको प्रेजेंट कर दिया। अच्छा, अब्दुल्ला आसिफ भट्टी, बहुत शोर शराबा करते हैं एग्जामिनेशन टाइम पे, पेपर चेकिंग के टाइम पे। मोहम्मद आलिफ आसिफ भट्टी, आप एब्सेंट हैं। अब्दुल्ला सिद्दीकी, अब्दुल्ला सिद्दीकी, मेरे पास बहुत सारे पीसीस पड़े हुए हैं मेरे ऑफिस में, तो मैं एक पीसी पे दूसरी पीसी पे मैं ना अटेंडेंस मार्क कर रहा हूँ। अब्दुल्ला आसिफ इज आल्सो, अब्दुल्ला सिद्दीकी इज आल्सो एब्सेंट। मोहम्मद उमर कासिम, Present, sir. Present, sir. थैंक यू। अफरा सियाब खान, अफरा सियाब खान, शहरयार खान, शहरयार खान, शारिक रहमान, Present, sir. शारिक रहमान प्रेजेंट है या शहरयार खान? Sharik Rahman, sir. Present. थैंक यू। फारिया अशरफ, फारिया अशरफ, ये भी ऑलमोस्ट एवरीडे आई थिंक एब्सेंट होती है। मोहम्मद एजाज अकरम, Present, sir. समन अब्बासी, समन अब्बासी, रेहान अहमद, Present, sir. रेहान, Sir, रेहान Rehan प्रेजेंट, present. Yes, sir. थैंक यू, Rehan. थैंक यू। आफिया शाहिद, आफिया शाहिद शायद पहले बीमार थी, अब पता नहीं क्या मसला हो गया इनके साथ, दे आर नॉट प्रेजेंट एट ऑल, ओके। अजीम आजम तारड़, Present, sir. okay, so the absentees are in this class Faraz Ahmad, Muhammad Zahir. अस्सलाम वालेकुम सर, जहीर हियर, आई एम प्रेजेंट। यार अभी आपको मैं देखने बात में मेरा टाइम जाया होगा ना, तो आपने पहली दफा जवाब नहीं दिया, तो अब मैं आपको एब्सेंट कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से आप बी केयरफुल, ठीक है। तो आमना, मैं आपको अभी एडिट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये लोग एब्सेंट मार्क हुए हैं, बस मैं एडिट नहीं कर रहा, कोई करेक्शन नहीं कर रहा। अच्छा, दी एब्सेंटीज आर, अगेन बता रहा हूँ, एब्सेंटीज आर फराज अहमद, एब्सेंटीज आर मोहम्मद जहीर, आमना इमरान, नताशा राव, मोहम्मद फहद इम्तियाज, अक्सा शफकत और अब्दुल्ला आसिफ भट्टी, अब्दुल्ला सिद्दीकी, अफरा सयाब खान, शहरियार खान, फारिया अशरफ, समन अब्बासी, आफिया शाहिद, दे आर ऑल एब्सेंट। आप लोग अपने अपने, मैंने डायरेक्ट यहाँ से
अटेंडेंस मार्क कर दिया है। अब ये नहीं कि अटेंडेंस मार्क कर दिया आप लोग सारे गायब हो जाए, ऐसा नहीं, क्लास आप अटेंड करें, ठीक है। अच्छा ये दो कौन है यार, ये तो गलत तरीका है यार, ये बाद में फिर कहते हैं कि मुझे फोटो, आई डोंट केयर अबाउट दिस थिंग्स यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम once again. यस, जो भी चीजें आप समझने की कोशिश करें, स्पेशली इन इन टेक्नोलॉजी फील्ड, आप उसे हिस्ट्री के मुताबिक उसको स्टडी करने की कोशिश करें। जब आप हिस्ट्री बनाएंगे तो आपको इट विल लुक्स लाइक अ ब्यूटीफुल, लाइक अ वेरी गुड स्टोरी, रियल स्टोरी, प्रैक्टिकल स्टोरी, ट्रू स्टोरी। तो आपको इस स्टोरी के तहत ये चीजें आपको याद भी हो जाएंगी, हिस्ट्री भी पता चल जाएगी और आपको टेक्नोलॉजी से आप वाकिफ हो जाएंगे। एंड दिस इज व्हाइल डूइंग इन, अगर आप पीएचडीज कर रहे हैं या कोई हायर मास्टर का थीसिस कर रहे हैं, तो आप इस स्टडी को क्या कहते हैं, लिटरेचर रिव्यू कहलाता है। इसका स्पेशल नेम इज लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू में जो पहले काम हो चुके होते हैं, दैट वी नीड टू एड्रेस। This is if we talk as per एक्सक्यूज मी सर, जी। सर वो शेयर कर दें, आप स्क्रीन शेयर कर दें। ये क्या होता है यार, ये क्यों नहीं होता शेयर? मैंने तो किया था शेयर, तो कर चुका हूँ शेयर। ये देख लें, आपको कोई अपना मसला? अच्छा नहीं, शेयर नहीं, नो सर, शेयर नहीं हुई है, रिकॉर्डिंग शुरू है रिकॉर्डिंग हो रही है ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू फॉर योर करेक्शन, टाइमली करेक्शन। ऐसा नहीं है कि लेक्चर खत्म हो गया फिर आप बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात आप लोगों की, दैट्स गुड। आई विश कि आप लोग अच्छे अच्छे मार्क्स आए, but it is you only who can get the good marks. I'm not a part of this one. Okay, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि the second part we have to calculate. The first part में हमने conduction losses निकाले हैं जो कि 377.5 मिली जूल्स हैं। You should remember ये 300 से, इसमें जो डोमिनेंट पार्ट है वो किसका है, ऑन एनर्जी का। यू शुड रिमेंबर दीज थिंग्स। नाउ द नेक्स्ट इज कंडक्शन लॉसेस के बाद नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द स्विचिंग लॉसेस। स्विचिंग लॉसेस के लिए, स्विचिंग लॉसेस इज वेरी इजी, एज इफ यू नो द ग्राफ, इफ यू हैव ड्रॉन द ग्राफ, द कंडक्शन लॉसेस के लिए आपको बस ये फॉर्मूला है, आप ये निकालें और कंडक्शन लॉसेस निकाल दें, इस लॉस को ऐड कर दें। एंड फॉर द स्विचिंग, रिगार्डिंग द स्विचिंग लॉसेस ये है, आपके पास ये फॉर्मूला है, इस पीरियड के लिए ये फॉर्मूला है, इस पीरियड के लिए सेम फॉर्मूला है, बट द टाइम ड्यूरेशन विल बी डिफरेंट। स्विचिंग लॉसेस यहाँ पर कितने हो गए, तो यहाँ पे स्विचिंग लॉसेस शायद ये मैं पहले करवा चुका हूँ। तो स्विचिंग लॉसेस के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, ये क्या एंड वी एंड अप विद 396.25 मिली जूल्स। ओके, नो, एनर्जी लॉस पर साइकिल, एनर्जी लॉस पर साइकिल, ये तो स्विचिंग लॉसेस ऑन टाइम ये वाला आ गया, और स्विचिंग एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन स्विचिंग में ये आ गया, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑफ स्विचिंग में ये आ गया। इसमें टाइम कितना है, 3 माइक्रोसेकंड है। एंड टोटल एनर्जी लॉस पर साइकिल कैसे निकालेंगे, कंडक्शन लॉसेस प्लस स्विचिंग लॉसेस। कंडक्शन लॉसेस याद है पिछली स्लाइड में, what we got 377.5 and switching losses from here 6.25 को ऐड कर दिया 12.5 से, तो शायद 18.75 we got the total energy loss per cycle is this। इसके अलावा टोटल एवरेज पावर लॉस, टोटल एवरेज पावर लॉस किस तरह करेंगे कि ये एवरेज पावर लॉस का मतलब ये हो कि यहाँ से लेके इस टाइम पीरियड के लिए टोटल स्टार्ट फ्रॉम हियर एंड टिल द एंड ऑफ द टाइम पीरियड, ये एक साइकिल ही है। इसमें इस साइकिल में कौन कौन से लॉसेस है, ये लॉस प्लस ये लॉस प्लस ये लॉस प्लस ये, सो टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड 10 मिलीसेकंड, तो 39.6 milliwatt। and comments, what we can comments here on state conduction losses, यार ये तो मैं करवा चुका हूं आप लोग को। so okay, so now this second part, इसमें हम ये देखें तो ऑन स्टेट कंडक्शन लॉसेस इतने हैं
is prominent, is significant, is dominant, और इसके बाद जो ऑन ट्रांजिशन स्विचिंग लॉस है वो तकरीबन 6.25 मिली जूल से 18.75 मिली जूल से, सो ये स्टिल कम है। ये तीनों के तीनों लॉसेस if we compare with the on-state conduction losses, so conduction losses is the dominant part. Part B, repeat part A, if the switching frequency is increased from 100 to 100 kilohertz. I explained before why we need to increase the frequency. Every time we need to increase the frequency because we know, I have explained before कि अगर मैं frequency जो जितने भी आपके पास conductors, converters हैं, DC-DC converters हैं, they need the capacitor, they need the transistor, they need the inductor. तो the inductor के साथ साथ बहुत सारे high frequency transformer भी, छोटे ट्रांसफार्मर भी इस्तेमाल होते हैं। So the ultimate solution to make the converter efficient, smart, compact, and of small size, low weight, we need to decrease the size of the inductance. This is the main objective while designing the, so inductor small उसी सूरत में हो सकता है whenever we increase the frequency, as I explained in the last slide. I have seen just now the recording, so I found that I have explained till this slide. So 100 kilohertz में फायदा ये होगा कि size small हो जाएगी. Now let us analyze what are the losses if we increase the frequency. Okay, so अब यहाँ पर example 1.6 ही है, the same thing है. I just repeated this one, and only we have to do the part B. Frequency is 100 kilohertz too. So if the frequency is 100 kilohertz, the time period will be 10 microsecond. T is equal to 1 by F, and time period is 1 microsecond. Then we can say that the half of the time is 5 microsecond, and the next half of the time is 5 microsecond. Recall, in the first part, the time was 10 millisecond, means T on is equal to T off time. First part में हमने ये suppose किया था कि जो T on time है, जो T off time है, is 5 millisecond, and T on time को भी 5 millisecond कर दिया हमने। ये इस वाले time को ignore किया है, but this is not possible in the part B. So this was the example of part A, but this is not possible in the part A because if we see here, this is in microsecond and this was in millisecond. So of course this can be ignored, but now for यहाँ पे लिखा है, in this case conduction time is very high than the switching time. Okay. So but for part B where the time period is 10 microsecond, part B में time period ये सिर्फ 10 microsecond है, so we cannot ignore. Okay, let's see the practical. So this is, I try to make it as good, as clear as possible waveform, but of course this is not a scale waveform. यहाँ पर just चीजें थोड़ी सी बड़ी की गई हैं, छोटी की गई हैं in order to visualize the waveform clearly. So total time period is here. The total time period यहाँ से लेके ये क्या है, यहाँ तक. This is basically time period, and this is 10 microsecond, and half of the time is, यहाँ से लेकर half of the time period कितना हो जाएगा, 10 microsecond का half 5 microsecond. Okay, and the rest of the half is also 5 microsecond. But if we see this time is 5 microsecond, but this is how much this is, ये already 1.5 microsecond है, total time 5 microsecond है, तो ये possible नहीं कि हम इसे ignore कर दे और हम 5 microsecond ले लें. So the exact value or the accurate value of this T switch off time will be, ये total half कितना है, 5 microsecond, इसमें से ये निकाल देंगे, you will end up with 3.5 microsecond. And similarly we did it here. Switch यहाँ पर ये देखें, ये कितना time दिया हुआ है, 3 microsecond. This is given in the examination, in the data. So see, T switch off was 3 microsecond, and then this is half of the time is 5 microsecond. So if we subtract 5 minus 3, we get 2 microsecond. So these are the new values for the on switch off time and for switch on time, whereas the on transition time is same as it was before.
and the off transition time is same as it was before. Only the time period is changed, because before the time period was 10 millisecond, now the time period is 10 microsecond, and in this case we cannot ignore this one, so we must have to subtract this one. Hopefully you understand. So in part B, where the time period 10 microsecond, switch time cannot be ignored. Switch time ignore नहीं कर सकते, इस switching time को ignore नहीं किया जा सकता. Now it's easy to calculate as we did before. From figure, it is clear that this is already I have written. Now to calculate the conduction losses, I think I solved on the same page. So this is the off conduction losses. Okay, instead of calculating the power, we calculated the energy loss directly. And energy loss off state. This is off state. Energy loss during off state. Vs कितना ये? Vs I leakage, as we have seen in the previous graph, previous waveform. So Vs is 500 volt, I leak is 1 milliampere, and T off is only 3.5 microsecond. So we ended with this one. As leakage current, again we can see the leakage current. Due to this leakage current, the losses is very less. It's just 1.8 microjoule. Now the switch on, energy loss during on state. On state means it stays on. A switching state means, switching transition means it's changing. It's continuously changing. On state मतलब ये अपने established state में, off state. So please energy loss on state कितना है? ये आ गया V saturation. यहाँ पर टाइम कितना है? 2 microsecond we found 150 microjoules. टोटल कंडक्शन लॉसेस कितने हो गए? इस लॉस प्लस इस लॉस को आप ऐड कर देंगे 150. रिमेंबर द कंडक्शन लॉसेस इन माइक्रो जूल्स. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट द स्विचिंग लॉसेस. अब हम स्विचिंग लॉसेस निकालेंगे. सो एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन स्विचिंग, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग ऑन स्विचिंग. यस, स्विचिंग के लिए ये निकालना है. इसके लिए फॉर्मूला क्या है? 116 Vs ist स्विच ऑन. टी स्विच ऑन यहाँ पर 1.5 माइक्रोसेकंड है. वी प्लेस 1.5 माइक्रोसेकंड. So now next is energy loss during off switching. Off switching ये वाला देखो, ये remember यहाँ पर off period ज्यादा है, switching transition period ज़्यादा है as compared to this the on state. So these are the important things that needs to be understood by you. So energy loss during off switching कितना आ जाएगा? यहाँ पर 3 microsecond है, and the total switching loss during transitions are this plus this, 18.75 millijoules. Total energy loss per cycle is equal to conduction losses plus switching losses. ठीक है, टोटल अब बात हो रही है टोटल एनर्जी लॉस. कंडक्शन लॉस को भी ऐड कर दिया, स्विचिंग लॉस. पिछली दफा हमने जो कंडक्शन लॉस was 151.75 microjoules calculated in the previous slide. Switching losses इन दोनों को ऐड कर देंगे 18.75. तो 18 अगर इन दोनों को ऐड कर दिए, we got 18.9 millijoules. It should be noted that switching losses are very, very high compared to conduction losses. Switching losses कहाँ है? ये है, कितना है ये 18.8 millijoules, and the conduction losses is 152 millijoules. Microjoules, oh yes, this is in microjoules, so this is really very less, and this one is millijoules. जबकि टाइम पीरियड भी कम है, इसमें इतने सारे लॉसेस हो रहे हैं. So the loss, so we can confirm here the switching loss. When we increase the frequency, the switching losses is abruptly increased as compared to the conduction losses. So conduction losses is 152 microjoules, and the switching losses 119 millijoules. So this one is 1,000 times, at least 1,000 times is greater than 1,000 times.
So it should be noted that switching losses is very, very higher than the conduction losses. Now the total average power loss is क्या करेंगे, total time से divide करेंगे, total time period 10 microsecond है. My God, 18,890 watt, or we can say book ने जो calculate किया ना वो ये value calculate की है. So I also approximated this one to 1900 watt. So the loss is 1900 watt. That is really very, very high. Okay, so now we have to see, this looks very strange. 1900 watt, oh my god, 1900 watt में तो जैसे ही आपने इस कन्वर्टर को इस फ्रीक्वेंसी पे आप जैसे ही आप अपने जो पोटेंशियोमीटर है या जो फंक्शन जनरेटर है उससे आप या पल्स विद मॉड्यूलेटेड जो 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 जनरेटर्स हैं उनको जैसे ही आपने 100 किलोहर्ट्ज पे रखेंगे ये उसी टाइम ये सब चीजें जल जाएंगी. क्यों जल जाएंगी? क्योंकि 1900 वाट ट्रांजिस्टर कैन नॉट, ट्रांजिस्टर के अक्रॉस सिर्फ 1900 वाट अगर आप सिर्फ लॉसेस की कंडीशन में है, ऑफ कोर्स इट विल ब्लो. So this is so it means इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर इस वाट पे ऑपरेट हो ही नहीं सकता. और अगर ऐसा है तो आप इसमें कमेंट्स देखें. At 100 hertz average power loss was 39.6 watt, whereas after increasing frequency to 100 kilohertz the power loss become 1900 watt, which is quite high. Thus it can be stated that at higher frequency losses starts to increase. What happens if we further increase? If we look in depth, we find that compared to the conduction losses, the switching losses are very high at higher frequencies. जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि जैसे मैंने जब कंपेयर किया तो switching losses बहुत ज़्यादा थे, मिली जूल्स में थे, और conduction losses in जैसे यहाँ पर conduction switching losses मिली जूल्स में थे और जो conduction losses हैं वो microjoules में तो. So the switching losses were very, very high. If the frequency is further increased beyond 100 kilohertz, then the switching losses will become more dominant, resulting in no use of the converter. तो कन्वर्टर यूज नहीं हो सकता अगर आपने 100 किलोहर्ट्ज से भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी आपने ऑपरेट कर दिया. इससे पहले मैंने जो लास्ट लेक्चर था and also in the start of today's lecture I have explained the recent trend is to increase the frequency in order to make a smaller, efficient and low weight converter, because the dominant part of the converter is the inductor and the transformers. So we need, अगर आपको ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के अगर आपको साइज छोटा करना है तो you must have to increase the frequency. So the only option, so the जो problem जो way है, the way we can increase efficiency is to increase the frequency. But in practical, what we have seen here, अगर मैं 100 hertz से 100 kilohertz frequency increase करता हूँ तो converter is not going to be useful, because इतने ज्यादा losses में तो ये बिल्कुल red hot हो जाएंगे. It will immediately turn off. It will immediately blown. तो इसका मतलब क्या हुआ? In general, the DC-DC converter consists of inductor, and it is desired to reduce the size of the inductor transformer, which can be possible if the converter is operated at higher frequencies. As we know that C is equal to this, inductance की value ये है, it means greater the frequency, higher the frequency, lower the value of the inductance. Frequency को high करो और inductance छोटा इस्तेमाल करो. ठीक है, this is the desire of all kind of designers if they are designing DC-DC converters. This is the main
this is the main objective of the designer. But what we have seen here, अगर मैंने इस frequency को 100 से 100 kilohertz कर दिया, so the losses in 1.9 something like 2 kilowatt. Oh my God! 5 kilowatt की लोड को ऑपरेट करने के लिए 2 kilowatt आप लूज कर रहे हैं, वो भी किसके क्रॉस? ट्रांजिस्टर के क्रॉस. It will immediately red hot और वो बर्न होगा, और अगर आपने ज्यादा अकलमंदी नहीं की है तो everything will be burned out. So these things need to be understand. इसका मतलब क्या हुआ, कंक्लूजन क्या हुआ कि इस जो भी हमने अभी जो कन्वर्टर पढ़ा है, इस कन्वर्टर में जो ट्रांजिशन स्विच ऑन लिया है 1.3 माइक्रोसेकंड और ट्रांजिशन स्विच ऑफ लिया है हमने 3 माइक्रोसेकंड. We took these values from the data sheet, or at least the approximated value from the data sheet. So such kind of transistor cannot be operated at this high level of the frequency, but it works fine at this frequency. इसका मतलब है कि there is a limitation for this converter. इस converter को मैं higher frequencies पे operate नहीं कर सकता, मैं इसे कम frequency पे ही operate करूँगा. Let's see how much attendees are there, otherwise I have to take once more attendance. Attendees 17. Okay, I have to tell you one story, and this is based on the truth. This is the practical problem. मैं जब स्वीडन में था तो वहाँ पर हमारे I was not the part of the power electronics group, but I was engaged with them. They were my colleagues, and they were doing research in the power electronics. And what they did, इनका मैं ये जो बात कर रहा हूँ ये 12-13 साल पहले की बात कर रहा हूँ. उस वक्त या उससे पहले क्या होता था कि जो लैपटॉप है वो उसके एडॉप्टर्स का साइज काफी बड़ा होता था, ठीक है ना. सो चूंकि यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज में they are frequently moved from one place to another place, and they need to carry the laptop as well as this bulky and heavy adapter. So उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि ये जो एडॉप्टर है इतना बड़ा है, उस जमाने में तो बड़ा ही होता था, अभी भी स्टिल इट इज बिग इनफ. तो वो ऑब्जेक्टिव उस जमाने में ये था कि एक ऐसा कन्वर्टर बनाए जो इतना छोटा हो, इतना स्लिम और स्मार्ट हो कि उसे आप लैपटॉप के एडॉप्टर की जगह पे आप लैपटॉप के इनसाइड जो पावर साइड है लैपटॉप का वहां पर फिट कर दें. और उस जो साइज था उसका वो एक समथिंग लाइक 10 क्राउन, और 10 क्राउन का मतलब तकरीबन हमारे जो 5 रुपए का जो सिक्का है ना, शायद इससे थोड़ा सा बड़ा. पहले जमाने में जो 10 रुपए का सिक्का आता था, तो इट्स समथिंग लिटिल बिट बिगर देन द 5 कॉइन ऑफ 5 रुपीस. तो इसके साइज का इन्होंने बनाया था. इट वाज देयर टारगेट. बट व्हाट हैपेंस, तो 1 साल तक तो उन्होंने इस चीजें पहले समझी, कोशिश किया, लिटरेचर रिव्यू किया, फलां किया, चीजें की, इन्वर्टर कन्वर्टर स्टडी करके उन्होंने एक बेसिक सर्किट बना लिया 1 साल के बाद. ओके, एंड दैट सर्किट उस जमाने में मैं जिस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने में जो फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम ऑपरेट कर रहे थे लोग रिसर्चर्स, वो तकरीबन 600-800 किलोहर्ट्ज, ठीक है. मैक्सिमम वाज 800 किलोहर्ट्ज. बट इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इनको इतना छोटा, होपफुली एवरीवन इज लिसनिंग मी, तो इतना छोटा इनको बनाना था कि वो लैपटॉप के इनसाइड में आ जाए, एडाप्टर की जरूरत ही नहीं है, डोंट नीड टू कैरी द एडाप्टर, उसका वेट. तो इसके लिए उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो इंडक्टिव पार्ट है उसको एज स्मॉल एज पॉसिबल किया जाए. इन ऑर्डर टू गेट दैट टारगेट, उस जमाने में जो फ्रीक्वेंसी 800-900 किलोहर्ट्ज इस्तेमाल हो रही थी, they need to design a converter that can be operated at 2 to 3 megahertz frequency. कितनी? 2 और 3 megahertz पे उनको डिजाइन करना था. ओके, so they started
फ्रॉम द जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया स्टार्टिंग फ्रॉम 100 हर्ट्ज, फिर हमने 200 हर्ट्ज किया, 300 हर्ट्ज का, ये तो एग्जांपल है. डायरेक्ट इट jumps from 100 to 100 kilohertz, but normally while in the designing phase or the development phase we increase step by step. So 100 to 200, yeah, 100 to 150 hertz. So they found when they increase their frequency approximately equals to 1 megahertz, immediately one part of the device is become red hot and the circuit blown. इस तरह से उन्होंने 8 से 10 कन्वर्टर जला दिए थे. Hopefully not everyone is sleeping. So 8 से 10 कन्वर्टर उन्होंने जला दिए थे. अब उन्होंने क्या किया, अब ये प्रॉब्लम है, उन्होंने हाथ उठा दिया, भाई ये तो हम नहीं कर सकते, 2 से 3 दुनिया में किसी ने नहीं किया 2 से 3 मेगाहर्ट्ज, तो भाई मैं कैसे कर सकता हूँ, हम नहीं कर सकते. तो उन्होंने हाथ उठा दिया. उसके बाद फिर उनके सुपरवाइजर तक बात हुई, तो वो उन्होंने फिर मजीद उन्होंने कहा कि यार अब तो मेरा हमारी पीएचडी नहीं हो सकती, क्योंकि पीएचडी ऑफ कोर्स इट्स पेड पीएचडी होती है, इट्स लाइक अ जॉब, आपको कुछ काम करके देना है. अगर आप ये काम नहीं कर सकते आपकी पीएचडी स्टॉप हो जाएगी एंड नो वन गिव यू फंड. तो अब ये सिचुएशन आ गई कि भाई इनकी तो पीएचडी रुक जाएगी, आप ये सोचने लगे कि यार किसी और फील्ड में किया जाए. इट्स अ चैलेंजिंग वर्क, बट उनके सुपरवाइजर थोड़े से स्ट्रॉन्ग थे. उन्होंने कहा कि वेट, उन्होंने फाइंड आउट किया और फिर मिल करके पता चला कि उसमें एक जो डायोड है, एक कन्वर्टर का जो एक डायोड है, वो फिर उन्होंने इंफ्रारेड कैमरा, उस जमाने में इंफ्रारेड कैमरा बड़े महंगे होते थे, आजकल तो हर जगह अवेलेबल है ना. उस जमाने में इंफ्रारेड एक्यूरेट हाई एक्यूरेट इंफ्रारेड कैमरा जो है ना वो बड़े महंगे होते थे. वो उन्होंने परचेज किया और परचेज करने के बाद जब उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि सबसे पहले जो ब्लोन हो रहा है, जो रेड हॉट हो रहा है, जिसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, वो डायोड है. And the diode was of Infineon company. It's a big and well-known company in the semiconductor devices. तो उनके सुपरवाइजर ने फिर Infineon कंपनी से कांटेक्ट किया, भैया आपका डायोड जो है ना बर्नआउट हो रहा है. तो पता चला कि फिर उन्होंने Infineon कंपनी वालों ने कहा कि दिस डायोड इज नॉट डिजाइन for the megahertz frequency, it's designed only 500 or 600 kilohertz, and you are operating this at very high frequencies. It cannot, of course, it has to burn out. तो फिर उन्होंने नेगोशिएशन हुई, फिर उसके बाद उन्होंने इन्फिनियन कंपनी ने कहा कि ठीक है जी, हम आपको एक नया डायोड बना के देंगे. तो व्हाट दे डिड, टोपोलॉजी में कोई चेंजेस नहीं हुई, सर्किट वही रही. उन्होंने क्या किया, उस डायोड जो कि सेमीकंडक्टर स्विच है, उसको उन्होंने इम्प्रूव किया और 6 महीने के बाद इम्प्रूव करके उन्होंने, इस दौरान 6 महीने तक इनकी पीएचडी रुकी रही, ये लोग घूमते फिरते रहे खूब, बट दे वर फ्रस्ट्रेटेड रियली. आफ्टर 6 महीने के बाद फिर उनके पास ये डायोड आ गया एंड देन दे ऑपरेटेड सक्सेसफुली एट 2 to 3 मेगाहर्ट्ज विदाउट बर्निंग एनीथिंग. इसके बाद जाहिर बात दूसरे छोटे प्रॉब्लम्स आ गए, लेकिन उनको ये प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गया, दिस इज द डायोड व्हिच इज गोइंग टू destruct the circuit, burn out the circuit. So इस तरह से उनकी पीएचडी कंप्लीट हुई 4-5 साल में. तो इट वाज जस्ट ए स्टोरी. तो मेरे यहाँ पे स्टोरी बताने का मकसद यही है आपको कि दिस वी आर स्टडीइंग आल्सो थ्योरेटिकली, बट ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड, कि हमारी जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, वी हैव टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, बट व्हाट वी हैव सीन हियर, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे इंक्रीज करते हैं तो लॉसेस बहुत आता है. ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस आपको इन्फिनियन कंपनी जाना होगा. मींस ये तो पुरानी बात हो गई, ये तो मैं आपसे बहुत पुरानी की बात कर रहा हूँ. अब तो जितने भी कंपनीज हैं उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड दे डिजाइन सिंपल पीएन जंक्शन से वो कहाँ मूव हो गए, सिलिकॉन कार्बाइड. उन्होंने क्या किया, उस डायोड में सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल यूज करके एक नया डायोड बनाया जिसकी टेम्परेचर स्टेबिलिटी बहुत हाई है एट अ हायर फ्रीक्वेंसी, एंड सिलिकॉन कार्बाइड इज अ लेटेस्ट मटेरियल. तो उन्होंने सिलिकॉन कार्बाइड, इसके बाद दूसरी भी जो डिवाइसेस थे वो उन्होंने सिलिकॉन का, तो हाउ दे सॉल्व द प्रॉब्लम, they solve the problem by designing
a new device, by modifying the device, means by changing the material inside the diode, inside the transistors. So इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक तरीका क्या हो गया कि आप MOSFET है नए सिस्टम को डिजाइन किया गया. ये तो मैंने आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की बात की ना. The problem was started as 1 kilohertz, 2 kilohertz. So in order to operate switch at higher frequency, new design techniques were developed and new switching devices, for example, PNP transistor से MOSFET आ गए, MOSFET से फिर हम लोग IGBTs आ गए. The switching losses are lower in the IGBTs than BJTs and SCR. While designing this type of converters, you must have to be well aware of the switching materials. The diode, excuse me, diode आप कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं? So material. So first, let me conclude this thing. So first thing क्या है कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मटेरियल means new latest switching devices you have to select. Okay, and the researchers are doing their work to design new switching devices. तो Infineon ने इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व की, इस तरह से बहुत सारे हैं. IOR है, इंटरनेशनल, I think it's like something international rectifiers, और Infineon है, बहुत सारे, there are a lot of companies. So they are trying to, अब ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूँ ना, ये is not the conventional power electronics, ये सारी advanced power electronics की चीजें. But of course we are just describing you theoretically. तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या साइंसदानों ने क्या चीज किया, उन्होंने सबसे पहले मटेरियल की इम्प्रूवमेंट की. नंबर सेकंड वे क्या है, furthermore different topologies such as ZVS or zero voltage switching and resonance switching are employed to reduce the switching losses. इसके बाद switching losses, मजीद switching losses जो हम we have not covered so far is मजीद switching losses, especially this is regarding the switching losses. Switching losses को solve करने के लिए ना सिर्फ हमने मटेरियल चेंज किए, मटेरियल इंप्रूव किए, बल्कि इसके साथ साथ अपनी जो टोपोलॉजीज है, लाइक बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक बूस्ट कन्वर्टर, देयर आर मेनी अदर कन्वर्टर्स. तो उनकी जो टोपोलॉजीज है, वर्किंग प्रिंसिपल है, उसको हमने मॉडिफाई किया. फॉर एग्जांपल एज ZVS जीरो वोल्टेज स्विचिंग, सिमिलरली जीरो करंट स्विचिंग, ZIS टोपोलॉजीज हमने यूज किए, and the resonant switching are employed to reduce the switching losses. So this part, you know, switching losses बहुत आसान है. मैं आपको सिर्फ वो पढ़ा दूँ, मैथमेटिक्स पढ़ा दूँ, एग्जाम्पल पढ़ा दूँ और मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो. Probably in one lecture you can complete the entire chapter. लेकिन this is not the emphasis of the. You don't have to just do blindly the solution of the numerical problems. No, we have to understand this is कि आपको actually पता चले कि क्या problem है. So I hope I explain as my best my best effort. I tried my best. So hopefully you understand these things. Now we have to, if you have any question you can ask, otherwise I have to do another. Okay, this is another slide and I have to share this slide, I think, first. The next topic is, so we finished this topic and you have to make notes on these things. Lecture 24, diodes, reverse recovery time, TRR, chapter 2, this time chapter 2 from Harun Rashid. Okay. So what I said before, तो मैंने आपको स्टोरी सुनाई, उसके पीछे
इस कोर्स का लिंक है, स्ट्रॉन्ग लिंक है कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड कि अगर हाई फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट करते हैं तो लॉसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉसेस को कम मिनिमाइज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू इंक्रीज, we have to modify the devices, for example the diodes, the transistors। and second method क्या है, आप जो टोपोलॉजीज यूज कर रहे हैं, जो सर्किट डिजाइन में यूज कर रहे हैं, उसकी भी आप सर्किट की भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। So in the series of this effort, the first we will discuss about the TRR time of the diode. What is TRR time? The current in the, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। Current in the, कितने लोग यार तो नहीं हो गए। चलो गायब हो गया तो होने दो, मुझे क्या है। Okay, reverse recovery time TRR. Current in the copper conductor is only due to the flow of the free electrons. You know, current in the copper conductors, copper जो कंडक्टर्स हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सो उसमें जो करंट फ्लो होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। बट करंट इन द सेमीकंडक्टर पी इंजेक्शन डायोड इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ द, but current in the semiconductor p injection diode is due to the flow of both the majority carriers and minority carriers। क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर में दोनों कैरियर्स होते हैं, मिनॉरिटी कैरियर्स भी होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अगर आपके पास एक आइडियल डायोड है और ये देखें ये ऑन है डायोड, इसलिए कि करंट इज मैक्सिमम, जब इस ऑन से ऑफ करेंगे तो ये आइडियल डायोड इमीडिएटली ये ऑफ हो जाएगा। बट द प्रैक्टिकल डायोड, if the diode is switched off from on state, अगर आपके पास प्रैक्टिकल डायोड है, फॉर एग्जांपल दिस वन है, ये डायोड आपके पास ऑन है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली व्हाट हैपेंस, प्रैक्टिकली ये जो करंट है ये यूं जीरो नहीं होगा, बल्कि ये स्लोली एंड ग्रेजुअली रैंप अप होगा एंड इट विल नॉट स्टॉप एट zero ampere, but it will extend to continue in the negative direction. So the current continues the negative direction and उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर ये zigzag थोड़ा सा होगा and then इसके बाद ये करंट आपके पास जीरो हो जाएंगे। So this is the problem कि जब भी आप किसी सेमीकंडक्टर डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को अगर आप ऑफ करेंगे तो ये मैंने एक्सेचुरेट किया हुआ है, एक्चुअली ये टाइम बहुत दिस टाइम इज इन माइक्रोसेकंड। तो ये जो टाइम है, the current will not stop immediately but it will continue in the negative direction और उसके बाद थोड़ी देर के लिए नेगेटिव डायरेक्शन पे पीक पे पहुंचेगा और फिर ये करंट ऐसे से इसके बाद स्लो हो जाएगा। व्हाई दिस इज कि देखें, जब चूंकि इसमें क्या है, ये जो प्योर कॉपर है ना, प्योर कॉपर में करंट इमीडिएटली स्टॉप हो जाएगा क्योंकि आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आपने स्टॉप कर दिया। जब एक ही चार्ज था उस मटेरियल में, इलेक्ट्रॉन्स ही थे और आपने इलेक्ट्रॉन्स को ही ऑफ कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इट हैज टू टर्न ऑफ लाइक दिस। बट इफ वी हैव सेमीकंडक्टर डिवाइस और इस डिवाइस में मेजॉरिटी ऑफ द चार्जेस भी हैं और मिनॉरिटी ऑफ द चार्जेस भी हैं, तो जब आप इसे ऑफ करेंगे, इस पॉइंट पे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे जीरो उस वक्त होगा। इसका मतलब ये हो गया, ऑफ करेंगे तो क्या चीज यहाँ पर स्टॉप हो गई है, मेजॉरिटी जो है चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इस मटेरियल में मिनॉरिटी चार्जेस भी हैं, तो मैंने जैसे ही आपने डायोड के क्रॉस वोल्टेज रिमूव किया तो मेजॉरिटी कैरियर्स तो स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन मिनॉरिटी कैरियर्स विल स्टिल कंटिन्यू बट इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो यहाँ से ये रिवर्स डायरेक्शन है। So let me explain this thing. If the diode is switched off from on state, then the current should stop. But the truth is that it does not stop immediately. Instead, current continues to flow through the diode for a short period of time. When the diode is stopped,
then the current due to the majority carriers stops. जब डायोड स्टॉप किया जाता है, it means जो बायस फॉरवर्ड वोल्टेज है उसे अगर मैंने रिमूव कर दिया है, if when the diode is stopped, means forward voltage is removed, then the current due to the majority carriers stops, but current due to the minority carriers still continues due to the storage of the minority charges in the PN junction and throughout the whole body. तो minority charges उसमें मौजूद होते हैं, तो वो minority charges मूव हो रहे होते हैं, और जब आपने फॉरवर्ड बायस वोल्टेज रिमूव कर दिया तो मिनोरिटी चार्जेस मूव होते रहेंगे, उस वक्त तक ये मूव होते रहेंगे, जब तक ये मूव होते रहेंगे उस वक्त तक करंट होगा ड्यू टू द मिनोरिटी चार्जेस, एंड दैट इज व्हाई इट इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, क्योंकि मिनोरिटी चार्जेस की जो चार्जेस है वो डिफरेंट होते हैं। तो वो थोड़ी देर के बाद वो जो मिनोरिटी चार्जेस जो मूव हो रहे हैं वो अपने अपोजिट चार्ज से रिकम्बाइन हो जाएंगे, और रिकम्बाइन होकर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मिनोरिटी चार्जेस अगर आपके पास होल्स हैं तो वो कुछ देर होल्स तो मूव होंगे, लेकिन कुछ देर बाद वो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके साथ अपोजिट चार्ज उनके साथ कंबाइन हो जाएंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो फिर न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देयर विल बी नो चार्ज, नो फ्लो। तो इसके बाद इट टेक्स दिस मच टाइम, ये जो रिकम्बाइन होने के लिए इतना टाइम लेता है, इसके बाद ये न्यूट्रलाइज होता है। ठीक है, okay, time is short, so this time from this point to this point is known as TRR, or this time can be divided by two parts. This is TA and this is TB, and the total peak current that goes in the negative direction is known as IRR, reverse recovery current. When the forward voltage is removed across the diode, the majority carrier stops, thus forward current IF stops. यहाँ से IF यहाँ पे stop हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप देखें मजीद, however, as the minority carriers still continue to run in the negative direction, therefore the current through the diode continues to run in the negative direction. ठीक है, I explained this thing. The minority carriers require a certain amount of time to recombine with the opposite charges and to be neutralized. So this time is called the TRR time. TRR time is the reverse recovery time. It consists of two components, TA and TB. The TA is due to the charge storage in the depletion region and represents the time between the zero crossing and the peak reverse current IRR. यहाँ से लेके यहाँ तक TA है, और TB यहाँ से लेके यहाँ तक है। The TB is due to the charge storage in the bulk semiconductor material, and total TRR actually जो आपको total time है वो TA plus TB के बराबर है। Manufacturer tries to reduce the TRR time, and such diodes are called the fast recovery diode. What are the fast recovery diode? Fast recovery diode means यहाँ पर तो ये इतना सारा टाइम ले रहा है इसको रिकवर करने में, जीरो आने में। ठीक है ना, if it happens like this one, अगर ये जल्दी से it's very sharply, very fastly recover हो जाए, so the TRR time if this one is reduced, so इसका मतलब ये हुआ कि this such diode is known as fast recovery diode. Any questions? Any questions? Please let me know. No, sir. Okay, thank you. Class is over.